Okay, good morning, students. Today is our first lab of DBMS. So first, let's understand what is SQL. Let me share the PPT. What is SQLs? So first of all, as you know, what is data, what is DBMS, why we require the DBMS. In a DBMS, what we can do? DBMS, it means we can create, manipulate, rename and delete the data from that database or table. So now these all are the commands, so we need to do everything. For example, हम कैसे करते हैं कि excel sheet में first we will create the new excel sheet. In excel sheet we will type column names and different rows and fill the data. So this is the database. After, if you made some mistake in a typing, then you will update that cell, right? So that is updation. If you want to rename the column name, you can rename the column name. Here you can delete that excel file. You can also delete the excel file. Similar way, in a database we can create the tables, we can insert the data, we can display some data, we can delete that data. Let me show you one example. Let me stop and let me save the entire screen. Um, Here it is the Excel sheet, class list of TC1 and TC2, right? Suppose this is the TC2 class list. These all are the columns, these all are the rows, this is data, and this is entire database. If I want to change here, uh, let's say admission only, admission. Or if I want to change here, only roll. If I want to write here number, then num, then I can rename everything. If I made the mistake, for example, yes, Tesia. So here, if I want to change this name, then I can yes, right? So this is the data updation, data delete करना है. If I want to delete this one, I can delete from this one, right? If I want to delete this entire file, even I can delete it. Now save, they will ask to save. So database में भी save, auto save होता है. करना है तो commit command use होता है. We can use the commit command to save this thing. Right now I am closing this thing. So everything we can do in a Excel sheet, that thing we can do in a database. Now what is the difference? Excel is the local. If I save this Excel file in a Google spreadsheet, then it will become a centralized. So now to access your database, your tables, your data from everywhere, we need one platform, centralized server, where we can store that thing, right? Yes, who raised the hand? Okay, for that we have one account Apex from Oracle. If you are having any query, you can ask, otherwise mute yourself. Here it is, Apex account, which is provided by the Oracle. It provides the workspace. Workspace, it means how to create the account. I will guide you, but just remember why we require this thing. In an Oracle server, in their server, they will provide some space
to store our data, to store our tables. So our task, whatever task we are going to perform, that will be stored in their server. So from anywhere, either from your mobile phone, either from your laptop or a tablet, from Rajkot, from Ahmedabad, from Delhi, from America, you can access that data. That is the advantage and beauty of this DBMS. That is the advantage of DBMS, right? So we will see it later, but first let's see this one. What is structured query language? SQL. Full form of SQL, remember this one. In MCQ 1 mark, they may ask. Structured query language. SQL is the structured query language. It is nothing new, but it is the set of command. So हम एक्सेल शीट में क्या बोले? Create, update, rename, delete. So these all are the command, and this set of command it is known as this SQL. Standard command set is used to communicate between the end user and to the database. So it is known as the SQL. Now there are mainly two types of SQL. One is the non-procedural language and procedural language. Non-procedural language, it means we need no need to specify any method. Just only mention what data you want. Just only mention what data you want. That is known as the non-procedural. So SQL is the non-procedural language. Remember for the MCQ or 1 mark. SQL is the non-procedural language. Right? These all are the characteristics of SQL. It is very easy to learn and use. Then whenever we have a large amount of data, then it will be handled easily. As we discussed non-procedural language, it means we do not need to specify the process to complete any particular task. Just give the command. जैसे हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? Okay, let me give you example. You have a 5 fruits, right? And out of I will say select any one fruit from 5 fruit. It means वो इंग्लिश स्टेटमेंट हुआ. सिमिलर काइंड डेटाबेस में सारे टेबल है, उसमें से हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का जो भी नाम है, जो भी एक्सेल फाइल है वो. सो सिंपल हो गया. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी. Last point is very important. SQL can be linked to most of other higher level language. That makes it first choice for the database programmers. उसका मेन मीनिंग आपको अभी मैं समझाता हूँ. Just one minute. In higher semester, you are going to do the projects, right? Or after graduation, you will work on a live project in any company. At that time, project requires the database. As you know, the application of the database. Already we have seen in a lecture part. So everywhere there must be a database. So database में से ही हमारी सारी एंट्रीज आती है. तो प्रोजेक्ट में भी एंट्रीज स्टोर करनी पड़ेगी और रिट्राइव करनी पड़ेगी. तो डेटाबेस एक होना चाहिए और एक साइड प्रोजेक्ट होगा, एक साइड डेटाबेस होगा. उसके बीच में कनेक्टिविटी. तो वो कनेक्टिविटी कौन सिखाएगा? I am not going to learn your connectivity. It will be in a particular language. इसलिए लिखा है other high level language. For example, in a Java there is one concept, Java database connectivity. So JDBC or DBC drivers like this. So जो भी आप हायर लेवल लैंग्वेज सीखेंगे उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करके एक पॉइंट आएगा. बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट यू कैन कनेक्ट योर प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस. देन वी कैन store the data and we can retrieve the data.
Okay, I lost my connection. Please tell me from where I lost the connection. Have you heard about the data types? Yes or no? Data type से lost हुआ? Okay. Data type से lost हुआ. Characteristic of SQL. Okay, fine. Okay. Okay, let me repeat that thing. Okay, one instruction for all of you. When this type of issue arise, पीपीटी की स्क्रीन विजिबल है, शेयर है, इसलिए मुझे बैकएंड का नहीं पता चल रहा है कि आई लॉस्ट माय कनेक्शन. सो एट दैट टाइम, without wasting too much time, after 1 or 2 minutes you can put message in my personal WhatsApp ग्रुप में तो है ही आपके पास, ग्रुप में रखो या फिर पर्सनल में बोलो कि सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया है. ठीक है, क्योंकि कई बार मैं टीचिंग करवाते जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको पता चल जाएगा, बट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट. ओके, हाँ, मैं ये बोला था कि लास्ट पॉइंट था उसमें, क्या था एसक्यूएल में, ये SQL can be linked to most of other high-level language that makes it first choice for the database. Okay, screen is not visible. Now it is visible. Right, thank you. हाँ, last point है, SQL can be linked to most of other high-level language that makes it first choice for the database programmer. It means in a higher semester, you are going to do the project, right? Maybe in 7, 6, 5, or any semester, or even after graduation, you will work on a live project in any company. At that time, you have a two part. One is your project and second one is your database. तो प्रोजेक्ट में तो आप वेब पेजेस कोई भी लैंग्वेज जिसमें बना लेंगे, ठीक है, पेजेस और वेबसाइट एप्लीकेशन वॉट एवर. दूसरा डेटाबेस, डेटाबेस भी आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बना लेंगे. नाउ हाउ टू कनेक्ट दिस बोथ मॉड्यूल? So for that you will learn in particular high level language one concept, that database connectivity. You will learn the database connectivity. For example, in a Java there is a JDBC, ODBC. So उससे आप connect कर सकते हो database. If database is not there, you cannot save, store or restore any data. For example, I gave one example in your Gmail. When you type your email ID and password, it will go to the Gmail server and Gmail server database and check it whether you have entered correct or not. If it is matched with that database, then you are allowed to go ahead. Otherwise, it will give the simple error, wrong password. So this is the connectivity between the project and database. So in all projects you require database, and as you know the application of DBMS, everywhere database is used. So database itna important hai. Now in this semester what we are going to learn, all the fundamentals basic. SQL क्या है, उसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होंगे, कब यूज होंगे, ठीक है. रियल इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोजेक्ट में करेंगे तब पता चलेगा, बट उसके लिए आपको क्वेरीज पता होनी चाहिए और कमांड्स पता होना चाहिए. At that time, it is not possible to learn that entire subject, right? So here we have lots of data types. Out of all the data types, these three are the main important. One is the number, second is the varchar, and third one is the date. These three data types are most commonly used data type. Let's see in our just number. Number, it means number. You can store any numeric value in this column, in this cell. It may be a decimal, it may be any integer value. Number,
n, d। उसका मतलब क्या हुआ? बिफोर डेसिमल पॉइंट्स इतने, बिफोर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इतने। वो आप तो सबको पता है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एंड डिटेल। Example is given AMT. AMT is amount, is our column name. So in that particular column, we are going to declare data type as a number 5,2. So after decimal 2 digits will be there, 5 digits. Okay. Second data type is character. As you know, in a C language, character means we can store the character having a fixed length. So character into bracket size. In this data type, you can store maximum 255 character. Here one example is given to you, name character 25. It means you can store up to the 25 character long only, not more than that. So next one is the varchar and varchar2. Don't worry, I'm going to discuss two difference, character and varchar and varchar2. First understand, in this type of data type we can store variable length alphanumeric data. Alphanumeric data, it means we can store number as well as character both. Number as well as character both. So now most of students are able to clear the difference between the character and varchar. Character में only character with fixed length. यहाँ पे varchar में और varchar2 में क्या? Variable length alphanumeric. मैक्सिमम 4000, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लेंथ इट मींस साइज जो दी है वो उसके अंदर ही है, अप टू दैट कैरेक्टर ओनली। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन varchar and varchar2? अपग्रेडेड वर्जन ओनली, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्लेटफॉर्म्स दे आर सपोर्टिंग varchar and there are few software, few applications are supporting varchar2 now. But nowadays varchar2 is supported by all the platforms. Earlier it was that varchar कुछ support कर रहे थे, कुछ नहीं support कर रहे थे, लेकिन there is little bit difference between versions only. This is the versions only. Okay. Best example of varchar2 is address, because address contains what? Your house number, house name, street number, colony number, colony name, pin code, everything. So whenever we want to store this type of data, we can use varchar2. Now you can understand very well, if we select varchar2, we are able to store everything, right? अगर हमने सब जगह varchar2 ले लिया, then तो भी चलेगा ना? Then let me ask one question. My column is balance. Can I take varchar2 as a data type of that column? Say yes or no in your chat. Everyone, I am repeating my question. My column name is balance. So but obvious balance में balance ही add करने वाला हूँ. So can I take varchar2 data type as a data type of balance column? Type your answer yes or no into a chat. यहाँ से पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया, कितना पता है. Everyone has to give the answer. Okay. I'm not criticizing anyone, but जिन लोगों ने नो बोला है उसके लिए सजेशन है, प्लीज दिमाग लेके आओ यार. Before few minutes I said varchar2, और यहाँ पे विजिबल ही है स्क्रीन पे, store variable length alphanumeric data. Alphanumeric data, it means you can store number as well as alphabets. So क्यों नहीं ले सकते हो?
Do you have any justification? If you have, then please let us know so we can change our opinion कि भाई ये नहीं ले सकते. There is another question. Logically और टेक्निकली बोथ में डिफरेंस ही है. आप बोलेंगे सर नो नो वाले ऐसे आर्गुमेंट है, सर ऐसे तो नहीं ले सकते ना, बैलेंस है. बट हैव आई मेंशन दैट थिंग? आई सेड सिंपली मुझे बैलेंस में वेर 2 डेटा टाइप लेनी है. कैन आई टेक यस और नो? योर सजेशन इज राइट ऑम, बट आई कैन take var2 data type as a data type of balance. मैं उसमें नंबर ही डालूंगा, उसमें अल्फाबेट्स नहीं डालूंगा. बट टेक्निकली यू आर नॉट रॉन्ग. टेक्निकली आप कोई भी रॉन्ग नहीं हो. हम नंबर ही लेंगे. क्यों? क्योंकि बैलेंस में नंबर ही होना चाहिए. वो कॉमन लॉजिक है, कॉमन सेंस है हमारी अमाउंट बैलेंस सब में. हम प्रैक्टिकली लैब में भी नंबर ही लेंगे. लेकिन आई वांट टू जस्ट चेक योर नॉलेज, व्हाट यू आर थिंकिंग. that's why yes हित. અનમ્યુટ બોલું સર? हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा. સર આપણે ક્વેરી ટાઈપ કરીએ ત્યારે સરખી રીતે ન લઈ શકે. નંબર આપણે ટાઈપ કર્યો હોય અને નંબર આપણે નાખવો છે તો સ્પેસિફિક આપણે એની લેન્થ હોય ને બધી કે ભાઈ આટલી લેન્થ નો નંબર હશે કે આટલું જ હશે બધું, તો આપણે નંબર યુઝ કરીએ. એટલે એવું ના હોય ને. મને એવું લાગે છે સર કે આ ક્વેરી નો આપણે યુઝ કરીએ એટલે આપણે નંબર નાખીએ છીએ અને નંબરની વેલ્યુ ફિક્સ જ હોય કે આટલી હોય ને વેરકેર નાખીએ તો એડ્રેસ ને બધું એ રીતે હોય. પણ આમાં તો ફિક્સ જ છે કે આટલી જ બેલેન્સ હોય, આનાથી વધુ જાય જ નહીં. તો નંબર નાખીને આપણે ઓછી જગ્યા સ્ટોર કરાવીએ તો શું વાંધો? એ પોઈન્ટ એગ્રી, પણ હું એ પોઈન્ટ ઉપર આવ્યો જ નથી. સાઇઝ મેં મેન્શન નથી કરી. માય ક્વેશ્ચન વોઝ ધેટ કે તમે ખાલી બેલેન્સ કોલમ છે એમાં વેરકેર 2 લઈ શકો કે ન લઈ શકો. તમારી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ સાચી છે. અમે તમારા પોઈન્ટે સાચા છો. હું એમ નથી કહેતો કે હિત ઓમ અને હજી ત્રીજો કોણ હતો એ ખોટા છો, નો વાળા ખોટા છો એવું નથી કહેતો. કોણ છે એક હજી કોઈ હતો નિશિત? યસ, તમે ત્રણેય ખોટા છો એવું નથી કહેતો. યુ આર રાઈટ એટ યોર પોઈન્ટ. બટ તમે બીજી રીતે થિંક કર્યું છે. જે લોકો યસ કર્યું છે ખબર નહીં વેધર દે think like this or not. Let me clear that doubt. You can take balance column as a data type vark2. You can, but we will not take a vark2. In such type of column we will take only numbers. Now Hit said about this size, so let me clear that thing. In a both number as well as vark2, you, if I mention same size, then what will happen is if I write number 10 and vark2 10, then साइज दोनों की सेम है. तो दोनों में मैं एक सरखी अमाउंट एड કરી શકીશ ને. અને સપોઝ ક્યારેક મારે એન્ટ્રી 500 ની કરવી પડશે, ક્યારેક મારે 10,000 ની કરવી પડશે, ક્યારેક 5 લાખ ની એન્ટ્રી કરવી પડશે. એટલે સાઇઝ ની લિમિટ આપણે અકોર્ડિંગ ટુ અવર રિક્વાયરમેન્ટ એ રાખીએ. એ તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. when you perform the practical it will be clear. Or any students no need to say sorry on any technical discussion or any topics. If you misbehaving and if you do the such type of nuisance, then you have to say sorry, but don't do this. Okay, અહીંયા આપણે બધા ભણવા જ આવીએ છીએ. તમે કોરી પાર્ટી છો, પણ મારે શું કરવું છે? કોરી પાર્ટીની અંદર મારે નથી લખવું, તમને જગાડવા છે કે તમે શું, તમારી પાસે શું નોલેજ છે, તમે શું વિચારો છો. આઈ વોન્ટ ટુ નો, આઈ વોન્ટ ટુ રીડ યોર માઇન્ડ. Clear guys? I want to read your mind, what you are thinking. Then and then I can solve what you are and what you are expecting. मुझे पता ही नहीं कि आपको कितना पता है, तो मैं क्या आपको दे पाऊंगा. ठीक है? So just chill.
हाँ, बट न्यूसेंस डिसिप्लिन नहीं रहना, उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ सर. वेरकेर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस कैरेक्टर, सो वी पुट बैलेंस इन अमाउंट मीन्स नंबर, सो वी कैन यूज. हाँ हाँ अर्सिल, दैट आई टोल्ड. इसलिए तो मैंने साइज और कुछ भी मेंशन नहीं किया. गुड डिस्कशन. आई वांट दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन एट particular laboratory session or in a lecture session. lecture session में स्टूडेंट्स ज्यादा है तो डिस्कशन ठीक है, और टॉपिक ऐसा है तो कर लेंगे, लेकिन लेक्चर लैब सेशन में आई वांट दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन. राइट, गुड. इट मींस यू आर टेकिंग actively participants, sir. So will be able to do arithmetic operation in bracket 2 also. My question like this: can we take balance column as a bracket 2 simply? Yes, you may. Answer of this question: yes, you may. May એટલે કદાચ તમે લઈ શકો. Now it depends on data. Now next question, आपने बोला do arithmetic operation in bracket 2 also. अगर आप if you have inserted only number then we can. अगर पूरी कॉलम bracket 2 में ली है, नंबर से आप इंसर्ट कर रहे हो तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. और we will do one thing, practically we will check it. ठीक है, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब चेक कर लेंगे इसको डुप्लीकेट करके. ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट, डेट डेटा टाइप. डेट एज यू नो, डेट का मतलब क्या? डेट, सिंपल. whenever we require any date we can use the date data type, like date of birth, date of joining, date of relieving, date of death. So and as you know, as you have a general knowledge, we have a lots of different date formats, right? DDMMYY, DDMMYYYYY, DDMONYY, MMDDYY. There are lots of. Now it depends on what? Again I am saying it depends on प्लेटफॉर्म. कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो और वो प्लेटफॉर्म विच डेट फॉर्मेट सपोर्ट. फॉर एग्जांपल एपेक्स है, कल आई थिंक हित का ही आया था ना, मुझे हित उमर का ही टेलीग्राम में आया था कि सर आई एम नॉट एबल टू insert this record. So according to the data he is trying to enter exact data, but in Apex format it is not supported. In SQL it is supported, but in Apex you need to change the format MMDDYY. So we will see it that one. I will inform you. So date format uske upar dependent. Now next is the long variable, store variable length string up to 2 GB. Row, whenever we want to store binary data you can use images, pictures, animation, clips. For that you can use row and long row, but we are going to use generally. अब कॉमन सेंस अपनी लगाओ तो वेरकेर 2 नंबर और डेट, उसमें सब कुछ आ गया ना, उससे आगे तो हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है. अर्लियर वी रिक्वायर्ड, वेरकेर 2 नहीं था तब कैरेक्टर, नंबर सब कुछ चाहिए, लेकिन वेरकेर 2 आ गया तो हम सब कुछ सेव कर सकते हैं, सब कुछ राइट कर सकते हैं. नाउ एज यू नो ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, plus, minus, multiplication, division, relational operator for comparison, less than, greater equal, less equal, equal, blah blah blah. Logical operators, or and and. और में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है चलेगा, एंड में कंपलसरी इट शुड बी करेक्ट, बोथ कंडीशन मस्ट बी करेक्ट, राइट? नाउ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल. चलो मैं फिर से रिकॉल करवाऊंगा कि हमने क्या किया. एक्सेल शीट क्रिएट की, उसमें नाम डिलीट किया, एंटर चेंज किया, अपडेट किया, सब कुछ किया. सो अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी है. डीडीएल का मतलब क्या हुआ? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच डिफाइन द स्ट्रक्चर, विच क्रिएट्स द टेबल एंड एवरीथिंग. सो वो कमांड इसके अंदर में है. मैनिपुलेशन लैंग्वेज इट मीन्स जो डेटा मैन्युपुलेट करेगा, इट मीन्स इंसर्ट करेगा, रीनेम करेगा, डिलीट करेगा,
वो सब कुछ मैनिपुलेशन में आएगा। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी। डेटा इतना हमें दिखाना है, इतना नहीं दिखाना है, इसको एक्सेस देना है, इसको नहीं देना है, इससे वापस लेना है, ऐसा। सो डेटा कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए दैट वी विल लर्न इन अ 5th यूनिट। तो DDL, रिमेंबर ऑल दिस फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एंड कमांड्स। लेट मी गिव यू IMP। MCQ में पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL, वाइवा में पूछ सकते हैं। Then after they may ask such type of question, write down any 3 commands of DDL, ठीक है। सो DDL पे कमांड है, उसमें से 3 लिखना है, ठीक है। वाइवा में भी पूछ सकते हो, टेल मी एनी 3 commands of DDL, टेल मी एनी 2 commands of DCL, like this। create is one command to create the database or its object। Now object क्या है? Object is the generalized word। In object we may create the tables, functions, index, views, stored procedure and triggers, everything we can create it। Then drop to delete the objects from the database। objects में सारे categories आ गई। alter, whenever we want to change the structure, it means data type or size, at that time we can use the alter। खास याद रखना, कंफ्यूजन मत करना, अल्टर के बहुत सारे वेरिएंट है, वो हम 1 by 1 बाद में देखेंगे। ट्रंकेट, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स। रीनेम, इफ यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम और टेबल नेम, यू कैन यूज द रीनेम कमांड्स। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन। एज आई टोल्ड, मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसके लिए। So already we have gone through the procedural and non-procedural language, so I am skipping this side। These all are the commands under this DML: select, insert, update and delete। Select to retrieve data from the database, so we can say that it will display some data। Insert, by after creating the table, first step, inserting data into that। Update, if you made mistake, if you want to update, you can update the records। Delete, record delete करने के लिए। DCL, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट से हम परमिशन, प्रिविलेजेस देंगे कि ये टेबल ये बंदा एक्सेस कर पाएगा, दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। रिवोक, विड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस गिवन बाय यूजिंग दी ग्रांट कमांड, जो हमने ग्रांट कमांड से दी है वो वापस लेंगे। TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजैक्शन, ये डिटेल में आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी समझ लो कमिट मींस सेव करने के लिए, रोलबैक रिकवरी का एग्जांपल हमने क्लास में लिया था। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो रोलबैक करना पड़ता है, तो रोलबैक। सेव पॉइंट, इट मींस टू क्रिएट द चेक पॉइंट्स, जैसे आप गेम में चेक पॉइंट्स आते हैं, सिमिलर सेव पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम PPT रखते हैं, ठीक है। वी विल सी each and everything in a practical। First I will give you the demo, then after you are able to perform the practicals। So okay, C-based students, I think you have created the account in Apex, and we have gone through the create syntax and insert syntax। So you may create one table name is student, only C-based student, table name is student। In that take any 5 column, generate any 5 column and insert 5 rows। कोई भी 5 डेटा 5 रोज इंसर्ट कर दो। आई विल आस्क दैट थिंग लास्ट, ठीक है। ये सी बैच के लिए। नाउ ए बैच के लिए, मुझे करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर। ओके, ए बैच स्टूडेंट्स, गो टू योर ई कंटेंट। इन ई कंटेंट आई हैव अपलोडेड वन एपेक्स मैनुअल, डाउनलोड दैट and perform all the steps and create the Apex account before the next lab। अभी ही करना है आपको, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, पीछे रह जा रहे हो, तो follow that steps and complete the account creation before the next lab, because without that account you cannot do anything, single command you cannot perform। Okay, so here it is, Apex manual। Let me put the link into chat। Here it is the chat, go to this link, you will find this type of page। Here you will find request a workspace, click on workspace। पे आप जैसे क्लिक करोगे, so you will find step number 3,
So go to one by one steps and generate the account. Once you done with this task, please put a message done into a chat, a batch student. A batch students I told, C batch नहीं, C batch वालों का तो हो ही गया है, मुझे पता है. Yes, Ashish Kumar, you can use MySQL, but what will happen? For MySQL, you require a laptop, and from laptop, it will be a local, right? So आपको each and every time laptop carry करना पड़ेगा. So online में क्या है? It provides the workspace on our Oracle server. So from anywhere. अभी देखो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप मोबाइल में से और कहीं से भी, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी ये कर सकते हो. मोबाइल में भी ये आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्वेरीज. तो कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं देगा कि सर आई डू नॉट हैव एनी लैपटॉप, तो मैं कैसे करूँगा प्रैक्टिकल. वी हैव अ सॉल्यूशन. दूसरा, सपोज कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आएंगे, लैपटॉप लेंगे और पर्टिकुलर एक लैब में बैठे. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ के कोई लोकल पीसी में बैठे, तो आपने स्टोर कर दिया सब कुछ, टेबल और वगैरह. यस, लोकल पीसी में MySQL है, विच इज कनेक्टेड विथ आवर सर्वर. जो हमारा सर्वर है उससे, तो आप कोई भी लैब में जाओगे तो वो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन विद इन आवर कैंपस ओनली ना, विद इन आवर लैब्स ओनली. तो आप घर जाके कुछ काम करना है, पेंडिंग वर्क है, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. सो उससे अच्छा है एपेक्स यूज करो, तो आप कहीं पे भी, घर से भी और यहीं से भी, कहीं पे भी आप कर पाएंगे. हेलो सर. यस सर वो ई कंटेंट में तो हमारा भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मतलब सभी सेम टू का ही दिखा रहा है. तो यार वर्क स्पेस में सर प्रॉब्लम आ रही है डिटेल्स डालने में. हाँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, डोंट वरी. जिसके पास ई कंटेंट में एक्सेस नहीं है वो नेक्स्ट कीजिए. स्टेप नंबर 3, इसमें you have to fill all the details carefully, your first name, your last name, or you need to type correct institute email ID only, because you will receive one email from the Oracle on this email ID within maybe a 1 minute, maybe a 2 minute, maybe after a few seconds. If you do not receive that mail in inbox, then once you can check your spam folder also, जैसे हम कंप्लीट करेंगे तब. ठीक है. और वर्क स्पेस, फॉर द इजी रिमेम्बरिंग, all of you need to write workspace name like your name underscore your surname. दूसरा दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सबका एक रहे और सबको इजीली याद रहे, इसलिए नेम अंडरस्कोर सरनेम वो देना है. ठीक है. कंट्री इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी. यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको. I hope all of you have finished the steps, so I am moving next one. कंट्री में इंडिया डालना है, यूसेज में ऑर्गेनाइजेशन मारवाड़ यूनिवर्सिटी डाल दीजिए. फिर नेक्स्ट कीजिए. यू विल आस्क वन सर्वे फॉर्म, दैट इज आर यू न्यू टू ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस. क्लिक ऑन यस.
Do you plan to use Workspace for university class or training? Click on yes or click on next. तो हो गया. Then after राइट अप्रोप्रिएट टेक्स्ट इन टेक्स्ट एरिया. यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सर क्या लिखे. सिंपली इतना लिख दो लर्निंग पर्पस, टीचिंग लर्निंग और लर्निंग पर्पस. क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन आफ्टर एग्रीमेंट वो रीड करके एक्सेप्ट करके नेक्स्ट. तो सबको समझ में आएगा. यस. एंड लास्ट स्टेप कंफर्मेशन. कंफर्म कर लो एक बार, डिटेल चेक कर लो. फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी करेक्टली स्पेल्ड है कि नहीं है. वर्क स्पेस चेक कर लो. देन क्लिक ऑन सबमिट रिक्वेस्ट. व्हेन यू click on submit request, you will find workspace requested and you will receive one email on institute email id. institute email id चेक करो. इजी स्टेप्स है, उतना डिफिकल्ट नहीं है. इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी में तीन चीज आपको मिलेगी. वर्कस्पेस, यूजर नेम एंड एनवायरनमेंट, एंड एक बटन मिलेगा क्रिएट वर्कस्पेस. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट वर्कस्पेस you will be redirected to the next page. So let me give you 1 or 2 minutes. So all of you will be at same page, right? If you have any query, any doubt, or if you stuck at anywhere, then please unmute yourself and let me know. Yes, Rahul, Vora, done. Good. Fine. Okay, create workspace के बाद you will be redirected to this page. Continue to sign in screen. When you click on sign in screen, it will ask to change your password. Simple, change your password and reach up to the step number 12. In a step number 12, you will receive this screen. ये screen आ जाए, stop हो जाए. ये screen आ जाए, it means you have successfully logged in, you have successfully created the account. ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना है. ये चेंज पासवर्ड का आ गया. ये स्टेप तक पहुंच जाओ सब लोग. CBase students, those who have done, please paste your enrollment number into a chat and then you may leave. For the attendance, paste your number and you may leave. Okay, now I'm stopping my screen. I think it is not required. Before coming to next level, all of you must have this account, because without that we cannot move forward.
Once you have done with this task, put a message down or write down the renderment number, and you may leave. Okay, if you have done, then you may leave. Nikhil, Ravi, Rohit, Priya, Urvisa, Dipen, Isa, Dhara,